a commutative simple ring with unity is a field. So this we have to show. देखो कम्यूटेटिव है, सिंपल है, सो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ गई. कम्यूटेटिव रिंग है मीन्स व्हाट वी नीड टू शो, यूनिटी भी है इसमें, ठीक है. एस रिंग और इस कम्यूटेटिव with unity, so we just need to show that non-zero element of R is inverse to prove it as field. ठीक है. So this is the only condition. Field क्या होता है? Field is a commutative ring with unity in which every non-zero element has inverse. So only that final condition is not given here. So that is something we need to prove. And in that, what will be useful? This simple ring will be useful. It is given that this ring is a simple ring. ठीक है. As R is simple ring. So its only ideals are 0 and R itself. ठीक है. These are the only two ideal. But we know that AR is ideal of ring R. ठीक है. That I have shown in previous lecture as well. ठीक है. So अच्छा, okay, where A is not 0, okay, that implies that A dot 1, because 1 is in R, so A multiplied by 1 will be 1, so this will be in AR. So this means AR is not 0, so it cannot be 0. Then what? Then AR has to be equals to R, as R has only 0 and R is its ideal, because this is a simple ring. Okay, so because AR जो है वो 0 नहीं है, so इसको R होना पड़ेगा. So यहाँ से what we can say, this implies that there exists some B belongs to R such that AB equals to 1. We can say this, right? भाई 1 जो है वो it is given that R में unity है. Okay, so अगर R का कोई तो एलिमेंट ऐसा होगा जो A से मल्टीप्लाई होके 1 देगा. बाय द क्लोजर वी कैन से दिस. ठीक है. Okay, so from this can we say that this A has inverse? Can we say that? हमें इसके लिए B A equals to 1 भी शो करना पड़ेगा, then only we can say. ठीक है. Also अच्छा, as B is not 0, because B अगर 0 होता तो A dot 0 0 हो जाता, 1 पे भी नहीं हो पाएगा, so B won't be 0 as well. So there exists C belongs to R such that B dot C equals to 1. We can say this as well. ठीक है. B किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके 1 तो देगा. ठीक है. सो अब देखो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, अब देखो हमें चाहिए BA. नाउ हमें चाहिए कि BA जो है दैट आल्सो इज इक्वल्स टू 1. दैट इज समथिंग वी नीड टू प्रूव. सो BA जो है इसको वी कैन राइट BA डॉट 1. ठीक है. सो BA डॉट 1 की जगह वी कैन राइट BC. फ्रॉम दिस वी कैन राइट B डॉट C, राइट? Or we know that these A, B, C are all are element in R, and associativity with respect to multiplication operation is satisfied in ring. So we can write this like this: B A B C. But A B is 1 from this, so यहाँ से we can say B 1 C. So this is B dot C, but B dot C is 1. Okay, so BA
equals to 1 equals to AB, thus A inverse equals to B, ठीक है. Hence for each A which is not equals to 0 belongs to R, there exists some element B in R such that A inverse equals to B. Hence R is a field. Hence because every non-zero element in fact has its inverse in R, so that's why this is a field. So I hope ये समझ में आया होगा. So this is the way. ठीक है. So ये जो A कैपिटल R वाला कॉन्सेप्ट है, this is very useful in such questions. ठीक है. जब भी नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स को प्रूव करने की बात आए, then always first think about this A capital R thing. ठीक है. This will be handy in fact in many questions. Okay, so let's discuss this question. Show that this is a set of matrices, 2 cross 2 matrices in fact, where these elements of matrices are from rational numbers. Okay, then we have to show that this M2, let's call this R in fact. Okay, so we have to show that this R is a simple ring. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी फील्ड हो सकता है इनफैक्ट, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है बिलोंग्स टू अ फील्ड एफ. यहाँ पे रेशनल नंबर है या रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, एनी फील्ड विल डू. तो सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय पुटिंग फील्ड एफ हियर, राइट. सो दिस विल बी वैलिड फॉर दैट एज वेल. तो इसका सॉल्यूशन देखो बड़ा सिंपल है. इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक जो है ट्रिक वी कैन से, और प्रोसेस विल बी यूज्ड इन दिस. ठीक है. फर्स्ट थिंग, सिंपल रिंग के लिए व्हाट आर द कंडीशंस? There should be two such elements that their product is non-zero, so we can have such elements like we can take 1 0 0 1 and 1 0 1 0. If I take this, then the product will be what? This is 1 and this is 1 and it's 0, and this is 1 and this is again 0. ठीक है. Which is non-zero of course. Non-zero means null matrix नहीं. So from that we can say that first condition satisfied. ठीक है. So there exists A B belongs to R such that AB is not zero. ठीक है. So first condition is done. Now to show that R has no proper ideals. ठीक है. This is something we need to show. तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास कि विल ट्राई टू अज्यूम अ प्रॉपर आइडियल एंड देन विल शो दैट यूनिटी परटेंस टू दैट आइडियल. एंड जैसे ही यूनिटी उसमें आएगी देन दैट विल that will coincide with our, that will be equal with our in fact. So then we'll say that in fact there are no proper ideals. ठीक है. Okay, so let I be proper ideal of R. ठीक है. Where I we can take 2 cross 2 matrix. कोई सी मैट्रिक्स ले लो, A B C D, we can take this. ठीक है. Where लेट्स टेक कि कोई भी एक जो मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो लेना है अपने को. ठीक है. कोई सी ले लो. लेट्स से कि B इज नॉट जीरो. B इज नॉट जीरो. ठीक है. लेट्स एज्यूम दिस. ठीक है. वेयर ऑफ कोर्स I इज नॉट जीरो. I जीरो क्यों नहीं है? बिकॉज एटलीस्ट वन मैट्रिक्स विल बी देयर विच इज नॉट जीरो. इसमें भी वही फर्स्ट केस तो ये लेना पड़ेगा. केस 1 इज व्हेन I is 0. So then there is nothing to prove. This is improper ideal. ठीक है. And then this is the case 2. Case 2. In this case 2 will show that this I is in fact R. That is what we need to show. तो इसमें वन नॉन जीरो, we defined this I as this. ठीक है. ऐसा नहीं, मतलब ये कुछ भी हो सकता है इनफैक्ट. इसमें एक एलिमेंट ले लो I में, नॉन जीरो एलिमेंट ले लो I में. ठीक है. दिस परटेन्स टू I, where
B is not zero, so this is a non-zero element, means non-null matrix in fact, ठीक है, because I is not zero, so at least one element will be there which won't be zero, right? So ये अब now we need to show that in fact ये जो है ओके, अच्छा यहाँ पे ए बी सी डी जो है तो रेशनल नंबर्स है, ए बी सी डी और फील्ड के नंबर इनफैक्ट दे आर रेशनल नंबर्स। अब देखो कि बिकॉज आई इज आइडियल, सो विल ट्राई टू शो दैट आइडेंटिटी लाइज इन आई, ये हमें शो करना है। आइडेंटिटी ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, ये इसमें लाई करती है, ये हमें शो करना है। तो देखो उसके लिए व्हाट विल डू, वी नो कि अगर इफ़ वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स by a matrix in which every other element is zero except let us say aii, ठीक है, then everything of that matrix after multiplication the resultant matrix won't have will have all elements zero except that row, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे मैं अगर आई आई ए आई आई ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो जीरो एंड सो ऑन एवरीवेयर जीरो है, ठीक है, इसको अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी डी टाइप ऐसे, तो जो रिजल्टेंट आएगी ना वो क्या होगा कि सिर्फ जो ये रो होगा, फर्स्ट रो मतलब आइथ रो इनफैक्ट, ये जो आइथ रो होगा दैट विल बी नॉन जीरो और एवरीथिंग एल्स विल बी जीरो, ठीक है। ऐसे इफ वी मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई बाई लेट अस से आई जे जे पोस्ट मल्टीप्लाई, then every column will be zero except the jth column, okay, so this is a effect of matrix multiplication in fact। so अब जो सेकंड केस, इसमें सेकंड केस हम ये ले रहे हैं कि जो अपना जो आइडियल है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, बेसिकली उसमें देयर विल बी दिस नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। अब देखो टू क्रॉस टू मैट्रिसेस का अगर बेसिस सेट देखा जाए, लीनियर अलजेब्रा विल स्टडी व्हाट इज बेसिस सेट, बेसिकली दीज आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, इसको वी कैन टेक लाइक दिस and 0 0 0 1, so these are the four matrices, they will be named they are two cross two matrices, so they will be in the ring, ठीक है। लेट्स कॉल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। अब देखो अगर जो हमारे पास पी मैट्रिक्स है वो क्या है, ए बी सी डी, if I multiply this we have assumed what that p is non-zero, so basically b non-zero करना है हमें, so basically if I multiply by 1 0 0 pre-multiply then this will kill every other element except first row, ठीक है। so इसको देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी ए, है ना, और यहाँ से आएगा ये बी और दिस इज 0 0। नाउ वी पोस्ट मल्टीप्लाई बाई such a matrix that everything becomes zero except this b because b is non-zero and we need that this b should come here because इस टाइप की कोई फॉर्म आएगी हमारे पास, then only will be able to say that इनवर्स आइडेंटिटी जो है वो आई में लाई करती है, ठीक है। सो देखो ये क्यों दैट विल सी, ठीक है। तो अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एवरीथिंग विल बी किल्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसके लिए ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम जो है उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, जैसे इस टाइप कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया। सो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डी, सो इसको मल्टीप्लाई किया हमने डी से, सो देन दिस विल बी दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो ज़ीरो, सो ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली व्हाट वी कैन से, अच्छा ये है क्या वैसे, ये दिस इज़ ए एंड पी एट टी, ठीक है। सिमिलरली अगर जो है ये अपने पास ए बी सी डी, नाउ व्हाट वी नीड दैट ये सेम चीज़ यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सो दैट मीन्स फर्स्ट रो को किल करना है, फर्स्ट रो को किल करना है मीन्स सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड रो में नॉन जीरो तो ये ले सकते हैं 0 0 1 0, तो ये क्या आएगा, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। नाउ वी नीड टू किल दिस ए, मतलब फर्स्ट कॉलम को हमें किल करना है, इसका मतलब सेकंड कॉलम जो होगा उसमें नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, सो ये है।
ये लिया जा सकता है 0, ओके सेम एलिमेंट हो गया है। ये भी लिया जा सकता है, देखो अगर 0 1 0 0 ये लिया जाए तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस वोंट वर्क। अगर इफ ये ले लिया जाए तो इसमें क्या होगा, देखो दिस इज 0, दिस इज 0, हाँ दिस विल वर्क, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डी, दिस इज डी राइट। तो ये क्या हो गया देखो, और दिस इज हिट एंड ट्रायल इनफेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास 0, अगेन दिस इज 0, और ये दिस इज 0, और दिस इज बी, ओके। एंड व्हाट इज दिस, दिस पास मैट्रिक्स इज ए पी, नहीं दिस इज नॉट ए, दिस इज बी, B P, and this is D, last is D only, right? D. So ये आ गया हमारे पास। Now if we see APD plus BPD का सम किया जाए तो what will be this? इन दोनों मैट्रिक्स को अगर जोड़ेंगे तो this is B 0 0 B, ये हो गया। and here B is not 0, that is what we have assumed, ठीक है। अच्छा further see that this, because see we know that A and D they are from the ring and P is from the ideal, ठीक है। So by the definition of, by definition of ideal I for A belongs to R, ठीक है, A belongs to R and P belongs to I, जो होगा AP will be in I, that is the definition of ideal। अब जब AP I में है, ठीक है, सो फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर D मान लो, D अपना जो R में ही है, सो इससे वी कैन से दैट AP डॉट D जो होगा दैट विल बी इन I बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल अगेन। नाउ दिस इज द एलिमेंट इन I, ठीक है। Similarly BPD is also in I, so by closure in I, APD plus BPD will also be in I, that means ये जो I हमारे पास B0 0 B, this pertains to I, ठीक है, where B is not 0, B is not 0, ठीक है। एंड दीज आर रेशनल नंबर्स एज वेल, या फील्ड में, सो बी 1/b जो होगा वो भी रेशनल ही होगा इनफैक्ट, ठीक है। एज b इनवर्स 0 0 b इनवर्स, दिस परटेन्स टू r, ऑफ कोर्स दिस विल बी इन r बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट करेगा b का, बिकॉज b इज इन फील्ड और रेशनल नंबर्स। सो by definition again, definition of ideal I for B inverse 0 0 B inverse, this pertains to R, this pertains to R, ठीक है। this pertains to R, and this B0 0 B, this belongs to I, so B inverse 0 0 B inverse and B0 0 B, this will be in I by the definition of ideal। अगर ए आई में है और आर जो है कैपिटल आर में है, तो ए आर और आर ए जो होगा दैट विल बी इन आई, यही तो हमने किया, दिस इज इन आर एंड दिस इज इन आई, सो इनका मल्टीप्लिकेशन विल बी इन आई। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, सो बी इनवर्स इंटू बी इज 1 0 1, सो दिस बिलोंग्स टू आई, that implies that I is nothing but R only, because identity of matrix, identity of ring is in I, है ना। Hence the only ideals of R are 0 and R itself, thus R is simple ring, simple ring, okay। So that is the hence proved in fact, so this is a good question। तो इसमें थोड़ी ये हिट एंड ट्रायल वाली कॉन्सेप्ट यूज करती है, मैट्रिक्स प्रोसेस इनफैक्ट यूज हुए हैं इसमें, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। R is ring with unity and the only right ideals
R is ring with unity, and the only right ideals in fact. This has R 0 and R itself, then show that R is division. Okay, so what is being said here that only one sided ideal है, not two sided. ठीक है, सो हमें ये शो करना है कि ये डिवीजन रिंग होगी, तो कर देते हैं. देखो यूनिटी है आर में और इसका राइट आइडियल है जो जीरो है ना, आर हैज जीरो एंड आर हैज इट्स राइट आइडियल्स. ठीक है, ओनली राइट ideals it has R 0 and R itself. ठीक है, सो बिकॉज इसके सिर्फ दो ही आइडियल है. ठीक है, 0 एंड R, तो हमें ये शो करना है कि दिस इज ए डिवीजन रिंग. ओके, अब देखो राइट आइडियल की बात हो रही है, तो वी नो दैट ए आर जो है, ए आर इज राइट आइडियल ऑफ आर. ठीक है, in exam we have to show this proof as well that this is a right ideal, and this I have proved in one of the previous lectures, so you may refer that. ठीक है, so this will use. और AR कैसे डिफाइन करते हैं हम? This is nothing but AR such that small r pertains to capital R, where A is a fixed element of R. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिकॉज A is नॉन जीरो, बिकॉज वो जीरो हो जाएगा. देखो इसमें दो ही केस है, दो आइडियल है, एक तो जीरो हो गया, तो उस केस में तो अगर a को जीरो ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा. बट इफ a इज नॉन जीरो, if a is non-zero, then this AR cannot be zero because there will be at least one non-zero element here. Okay, so yeah, non-zero element will be there. So AR will be equals to R then, because इसके तो दो ही आइडियल है, जीरो एंड R. AR जीरो नहीं है, so this has to be R then. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये डिवीजन रिंग है. जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. दैट इज द थिंग वी नीड टू प्रूव. ठीक है, सो यहाँ पे ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है ऑफकोर्स, और यूनिटी भी है इसमें. ठीक है, सो देखो ए डॉट वन विल बी इन ए आर बिकॉज वन इज इन आर. दैट मीन्स ए परटेन्स टू ए आर. ए इज नॉन जीरो. ठीक है, सो दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट इन ए आर, दैट्स वाई दिस वॉन्ट बी जीरो एज वेल. सो यहाँ से फर्दर वी कैन से दैट सो देयर एग्जिस्ट there exists B belongs to R such that a B equals to 1, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, वी कैन से दिस. इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स राइट इनवर्स ऑफ A exists in R. ठीक है, राइट इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा. सो दैट्स इट. डिवीजन रिंग तो मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वही जो पहले वाला कॉन्सेप्ट किया हमने, बिकॉज B कैन नॉट बी जीरो, सो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू R सच दैट जो हमारे पास होगा BC होगा वो 1 हो जाएगा. नाउ इफ वी टेक BA, तो BA को वी कैन राइट BA डॉट 1 और BA डॉट 1 को वी कैन राइट B डॉट C, और दिस इज B ABC because of associativity in R. So B, this is AB is 1, C then B dot C, that is also given. So BA equals to 1 equals to AB, thus A inverse equals to B. So every non-zero element in R has inverse. Hence R is division ring. I hope you understand. So this is a simple